वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असैसिन क्रीड मिराज। और लास्ट एपिसोड में हमें एक पोटेंशियल नेक्स्ट ऑर्डर मेंबर की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। एक स्कॉलर को कैद करके उससे कोई एंशिएंट स्क्रिप्ट का कोड क्रैक करवाया जा रहा था किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। सो फ़िलहाल उन क्लूज से जो लोकेशन हमें मिली थी वो ये है। और लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है मज़ीद। तो इनकी से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। But nobody's home. Now is my chance to search her place. Nobody's home, so maybe कोई गार्ड्स भी नहीं है। क्या मैं सेफली घूम फिर सकता हूँ यहाँ पे? ओके, सो ये एक बार डोर है और यहाँ पे भी घुसा जा सकता है ऊपर किसी विंडो को ब्रेक करके। एक क्लू ये रहा। डिफरेंट जगहों पे हैं क्लूज एक्चुअली। Another book of poetry by Arib. She definitely is popular in certain circles. ठीक है, तो अरीब वही पोएट है जिसके बारे में बासिम पहले बात कर रहा था। अलगुल की तरफ से लेटर। ओके, या डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है ज़ारा की। Definitely tied to the order, along with somebody named El Rabisu. Learned all I can. Better get to high ground and get ready. Zahra might return any minute. ओह, सो हम उसे अभी असैसिनेट करने लगे हैं आई गेस। ओह यस, ओह यस, लेट्स गो, आई एम रेडी, लेट्स डू दिस। बट हो सकता है उसके साथ अब गार्ड्स भी वापस आएंगे, सो ये एरिया क्रॉल कर रहा होगा गार्ड्स के साथ। देयर शी इज। Servants, prepare a glass of date juice on ice. And serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Then prepare the bath salts. I am utterly beat. All right. Paradise is where you find it. That old fool tinkering with his worthless ancient disc and helpless patience. Nah. Of course, Sayyidati. The real answers are in books. They are always in there. Am I not right? Always, Sayyidati. When I get that book translated, then we'll see who is the real head of the order. As you wish, Sayyidati. ओके, ये बंदी मूव कर गई। मैंने कहा यहीं स्मोक बॉम्ब फेंकता हूँ और असैसिनेट करके निकल जाता हूँ। बट ऑफ कोर्स गेम इतना इजी क्यों बनाएगी हमारे लिए। चलो भाई भागो। ऑल राइट, बहुत कोई सटल और स्टेल्थी वर्क नहीं था, बट आई गेस इतना भी बुरा नहीं है। ऑल राइट, वी आर आउट ऑफ हियर।
गार्ड स्टिल मेरे पीछे आ रहे हैं। ओह yeah. सो एक्चुअली ब्लू वाले जो गार्ड्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के गार्ड्स हैं। Strange book would get their great work functioning. Good thing Hunayn could not translate a single word. I should return to the Rafiq. वेरी गुड। सो हमें वापस ब्यूरो जाना है। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है ये, पहुंचते हैं जल्दी से। सो मुझे पता है पहले क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि या आ रहा हूँ। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो प्रीवियसली 2 टारगेट्स हम लोगों ने मारे हैं, जिनके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक फैदर यूज़ नहीं किया ब्लड के लिए, वो माइनर टारगेट्स थे हमारे, जो कि अल्टीमेटली हमें जो मेन 5 मास्क्ड ऑर्डर मेंबर्स होंगे उन तक लीड करेंगे। थ्योरी है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now. But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go! Spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. तो देखा, स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए हमें फैदर दिया जाएगा और एनिमस कॉरिडोर के अंदर असैसिनेशन के बाद उनसे डायलॉग वगैरह भी होगा। मैं यही सोच रहा था कि वो मेजर टारगेट नहीं होंगे। केस अनवेल्ड। तो फाजिल का नाम एक्चुअली पहले आया है, जो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में देखा था, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कहीं या जो हमारा मेन टारगेट है, यहाँ पे आप देखो, अरीब्स वर्क इज़ इंजॉयड बाय फाजिल एंड विद इन दी ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि फाजिल डेफिनेटली लिंक है। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि यार आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लेकिन अब इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये बंदा फाजिल हो सकता है। बट बहरहाल इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स गो। स्किल्स हमारे पास फ़िलहाल 2 हैं, जो कि मुझे आई थिंक कर ही लेते हैं। एक्स्ट्रा हेल्थ भी बुरी नहीं है। हम लोगों ने इधर जाना है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, फास्ट ट्रैवल करता हूँ और फिर आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे सिम्पोजियम चल रहा है। Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture.
Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Okay. Where is Arib Opportunities. the poet? Looks clear. I can use my weapons again if needed. ओके ईव्सड्रॉप करने के लिए मुझे लगता है कि लाजमी मुझे किसी बेंच पे ही बैठना पड़ेगा ब्लेंड इन करने के लिए. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons, for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. The poet Arib is resting in the eastern outer courtyard. All right, so उससे में भी बात की जा सकती है. Use of tools is not allowed in this location. Okay, but combat is permitted, right? ठीक है, तो और कोई यहाँ पे क्लू वगैरह या इन्वेस्टिगेशन मुझे नज़र नहीं आ रही. So where is Arib? और ये यहाँ क्या कर रही है? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Okay, ठीक है. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed Ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Okay, so अहमद के ऑफिस में unusual diagram जो कि कोर्स हम पहले देख चुके हैं. So what else? Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. Okay, so I guess एक चीज़ और रह गई है. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light.
But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. इंटरेस्टिंग। बट बहरहाल फिलहाल फोकस करते हैं जो मामला अभी करंटली चल रहा है। सो आई थिंक ये गार्डन है। Spirit of the sands. So Pilot of desert. ये है पोएट। Yes. Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. All right. मुझे लगा मैंने शायद कोई एक बंदा जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं वो देखा था कोर्टयार्ड के दूसरी तरफ, बट आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी पूरी हो चुकी हैं। लेक्चर शुरू होने वाला होगा। मल्टीपल लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। You should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Attention symposium attendees. Lecture will begin after the That astronomer might be one of them, though I doubt it. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. All right, let's go. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today, I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. तो ये क्राउड में हिडन ब्लेड क्यों निकाल रहा था? ये कोई तरीका तो नहीं है। You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge?
How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. So मेन टारगेट हमारा यहाँ पे है. So ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. It is true. Fazil leads the Order in Abbasiyya. I need to hunt him down. Let's see के क्या opportunities हैं यहाँ. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the Great Scholar? Forget I mentioned it. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Okay, so gardener के पास की है. So ये रही की. उसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज? बहुत सारी हम लोगों ने देखी थी. सो कुछ ना कुछ होना चाहिए और आई गेस, बट कुछ भी एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा है. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Should I bribe him? Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samarra. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course. Forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. All right, so key हमें मिल गई है. उसके अलावा hidden access हमें मिल गई है. Now let's see और क्या चीज़ है यहाँ पे. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost Fossil's greatest work. Okay, so हमें वो पेपर ढूंढना है जिसके ऊपर ये पासवर्ड वगैरह होगा. ओके, सो इस एपिसोड को मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड एक्चुअली एक ही प्ले थ्रू में मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की बन रही है. लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि 1 घंटा जो है वो बेस्ट नहीं रहेगा. सो इस एपिसोड को मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ. अल्टीमेटली हमें पता है कि हमने फाजिल को असैसिनेट करना है अब, बट उसकी जो असैसिनेशन है उसकी प्रिपरेशन में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी टाइम लगेगा हमें. सो वो ऑलमोस्ट अपने आप में ही एक एपिसोड है. सो ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस मैं इसे यहाँ पे इंटरप्ट करके यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. और अगली एपिसोड का भी छोटा सा इंट्रो जो है वो मैं इसी तरह से दे के सेम प्ले थ्रू को वहीं से आगे कंटिन्यू कर दूँगा. सो होपफुली ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होगी और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग कंटिन्यू देख सकोगे कि फाजिल के साथ अल्टीमेटली क्या होता है. सो मिलते हैं उस एपिसोड में. बाय बाय.